Okay, so I'm gonna introduce you to ethics. Why I'm saying introduce because Pooja ma'am loves to take ethics and she is good at it. So the lectures would be taken by her online, Q online, because अच्छा she will be okay. Let me explain you what. But पहले पहले बता दो structure क्या है ethics का. So ethics is there in your book number 4, and it is starting with the reading number 89. I don't know why it's not really selected. 89, 90, 91, 92, and 93. Okay, but technically, what it is about three things. It's about 6 codes, 7 standards, okay, and something called as JIPS. But before going over here, let me explain you कि क्या क्यों ये टॉपिक रिक्वायर्ड है, why is topic required, and is it like similar to the ethics that we might have learned in the college, which is a little bit theory. Let me clarify about these points. So number one, as an investor in a stock, or as an investor in any company's project, so for example, when the company is investing, let me light thoda sa bright hai. So as a investor in a company, or maybe a company might be investing in a project, they need to know two things: what is legal and what is illegal. What are things which are allowed as an investor for me, and what are the things are not allowed for me. See, when company is investing in a particular project, what are legalities about it? So law are important. And second one, whatever profit that we generate from that, what's the tax rate on that? It's the second thing that is important. What is the capital gain tax as an investor, and maybe when a company is generating some profit, on that profit, how much tax they have to pay. So as an investor also, and as a company also, I need to know about two things: the law and the tax. But here comes the problem. The problem is that because we are taking a CF exam, which is taken by students worldwide, which law they will introduce and which taxation they will teach you, because every country has a different law. Some follow common law, some follow civil law. Every country has a different taxation system. So from that perspective, they decided कि okay, we will neither keep law, will not keep taxation. Although taxation they have kept in some parts in the level 3, okay, not in the prior level, so they are kept in the level 3. But law हम नहीं ला सकते. They decided कि okay, we can't bring the law because American laws are different from Indian law. So from that perspective, why should Indians learn American law and why should Americans learn Indian law? So what they decided, okay, we will bring something which is commonality in that, and commonality in the law is the basic thing of ethics of doing the business. Not just ethics of doing the business, ethics of doing any professional practice. Sounds like very crazy, but to give an like example, so that you get an idea about it. Pooja will again, like when she starts taking lessons, you'll get a more detailed idea about it. कि एक तो ठीक है कि मुझे insider information मिली है कंपनी की. I got a insider information from about a company. So it's obviously my natural will be like I use that information and trade for a profit, which is obviously going to be unethical. ये तो सबको क्लियर है, राइट? इसमें कोई डाउट है? हाँ, करना तो है, हमें पता है कि करना, लगता है कि खुशी होगी प्रॉफिट मिलके, बट it's unethical because that information is not available in the public domain. It is something that you got from here and there. Insider है information. So it is unethical. It, see again, यहाँ पे भी एक है कि इंडिया में it is illegal, but कब से illegal हुआ इंडिया में? 1995 से हुआ, जब हर्षद मेहता हुआ तब से. उसके पहले इंडिया में लीगल था. एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज नाउ आल्सो इन द वर्ल्ड जहां पे इंसाइडर ट्रेडिंग लीगल है, इलीगल नहीं है. इट्स अलाउड टू डू इंसाइडर ट्रेडिंग इन सम कंट्रीज. बट पॉइंट इज, you know ना कि when you're doing insider trading, you are harming someone because that guy does not have that information. Basically, you are trying to loot the market, you can say. You're trying to cheat because others are not having that information. So from that perspective, you try to uh, dive into the company and get that information. And from that, I mean, that information was not available with the others. So it was not a fair playing field. So it was unethical thing to do so. ये तो क्लियर है, राइट? रीजन इफ इट इज क्लियर. बट इसके आगे वाला चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों ये सेशंस इंपॉर्टेंट है. रीजन इफ इट इज क्लियर कि इट इज अनइथिकल. किसी को डाउट है ये इथिकल है? लीगल और इलीगल केस में नहीं पढ़ते, बट अनइथिकल है तो क्लियर है बिकॉज अदर गाय डू नॉट हैव द सेम इंफॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग, and you did not get it from the company. You got it from unofficial sources. So it is sorry. It is unethical from all angles. Now the second thing is
जो शायद आपको इतना इजीली पता नहीं होगा कि इस इंफॉर्मेशन को रिसर्च रिपोर्ट में भी यू कैन नॉट कैप्चर। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है कि रिसर्च रिपोर्ट लाइक यू मेक लाइक अभी मार्केट प्राइस इतना है, करंट मार्केट प्राइस इतना, टारगेट प्राइस जा सकता है, एंड यू गिव अ लॉजिक टू दैट। So that is called as the research report. So, एक तो कि you cannot trade on the insider information, and second, you can't write it on the research report also, because if you write it on the research report, others are going to trade on it. So, ठीक है, you didn't trade on it, fine, good. But when you when you consider that information in making a research report, and then you're sending that research report to others, others are trading on that. So you're making others trade on the insider information. That's the problem. So that's the second thing. ये इतना obvious नहीं था ना, मतलब at least when I was studying this in 2009 for the first time, मैंने अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने सोचा नहीं होगा, वहां पे क्लियर होगा। लाइक व्हेन पूजा मैम विल टेक द सेशन। थर्ड थिंग उसी से रिलेटेड वाला थिंग कि when you are in a position of insider information, it might be the case ki the others could also be like, not everyone in the public, but others could also be in the like when the information has come to you, might it could be like it could have lead to like few more guys. Now you might be a good guy, so you may not be trading on that because you are like, okay, I should not loot the other players who don't have that information. But the other few guys may not be as good as you are. So what you should do? You can't stop them, right? So what you have to do, you have to go to the company. No, this is a little funny. You have to request to the company's management कि अरे तुम्हारा ना insider information leak हो गया है, मेरे पास भी आ गया है, तो प्लीज ये information जल्दी से जल्दी पब्लिक में रिलीज करो, so that these few guys, I'm not gonna trade, I'm a good guy, but this few XYZ guys, they are bad guys. They should not trade on that information, causing a losses to the retail investors जिनके पास information नहीं है। ये भी मेरे सोच के बाहर था। ये सिर्फ मैंने सोचा है ये वाला चीज कि इफ आई हैव अ टीसीएस का इनसाइडर इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट गोना ट्रेड ऑन इट बिकॉज आई एम अ गुड गाय, आई एम एथिकल गाय, assuming is in this case, I will not write this information in the research report, because if I write it in the research report, in that case, and I'm send that research report to others, in that case, I'm not trade, but I'm causing others to trade. So I'll not incorporate that information in the research report. And number three, when the information has come to me, it might have got to some other guys also. I'm ethical, but XYZ guys are not ethical. They might be using this opportunity to trade, and the retail investors are going to be losing money. So contact the TCS management, tell them कि आपका insider information leak हो रहा है, and few guys are having it. So immediately release this information in the public domain for the betterment of public. ये वाला चीज बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से not something which could be easily striking you. Okay, so for this, it is important that whatever examples are going to be taught to you, you need to know about it. सेकेंड थिंग, ये थियरी नहीं है, लाइक मतलब थियरी मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं, आई मीन थियरी का क्या मतलब है? कैन समवन एक्सप्लेन मी, लाइक व्हेन आई से सर थियरी है क्या, कैन समवन एक्सप्लेन मी, लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हेन यू आस्क सर ये थियरी है क्या, तो थियरी का तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब थियरी तुम ऐसे क्यों पूछते हो तुम लोग, ये थियरी है क्या? एनीवन अनम्यूट एंड क्विकली टेल मी लाइक व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ थियरी फॉर यू? कम ऑन गाइस, क्विकली अनम्यूट, so to understand, so that I'll tell you ये थियरी है या नहीं है, मतलब। अच्छा, मैं क्वेश्चन, हाँ नीनाद बोलो बोलो। सो सो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लाइक देयर इज नो रट्टा थॉट मारना, प्रोसेस रट्टा एनी। मारना। हाँ मतलब मतलब एनी फॉर एनीथिंग एग्जाम्पल लाइक मैं बता रहा हूँ, बीटा इंक्रीज, लॉजिकल नहीं है वो, हाँ मैं टू बोला बी वेरी बीटा ऑनेस्ट इन इंक्रीज हो माय रहा व्यू। है, लेट मी अगर बीटा इंक्रीज हो रहा है तो रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा? अब बोला जाए तो ये थियरी है, बिकॉज देयर वाज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व ओवर हियर, बट इट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर बीटा इंक्रीज होगा तो स्टॉक हैज बिकम मोर रिस्की, एंड हिंस इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर अ हाई रिटर्न फ्रॉम दैट, आरएफ प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो बीटा इंक्रीज होगा तो सेकंड टर्म, आई नो ना, आई बिकॉज़ नोज अबाउट इट, बट ठीक है, अगर नहीं है तो भी जस्ट, सर इथिक्स के बीच में आपने क्या चालू कर दिया, बता जस्ट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये, इसको मैं थियरी नहीं बोल सकता, ये लॉजिकल एप्लीकेशन है कि बीटा इंक्रीजेस, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू इंक्रीज। अब ये वाला चीज थियरी नहीं है, लॉजिकल कंसेप्ट। हाँ, देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव टू बाय आउट, जो आर्या को बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम अंधेरी बैच, आरपी माइनस आर एफ ऑन सिग्मा, ये शार्प रेशो, अब इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो दिस इज, आई वुड से दिस इज अ थियरी इक्वेशन।
वो सिग्मा ई का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ W1 सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 होल स्क्वायर, ये वाला चीज है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा. तो आई वुड कंसिडर थियरी एज द थिंग दैट आई नीड टू बाय हार्ट. ठीक है, तो इथिक्स में ऐसा कम है. देर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू बाय हार्ट. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू apply. And so for that, solving the questions of ethics is going to be very, 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 very important. Now, from where are you going to solve this question? A, like ethics में ना read करने के लिए कुछ है नहीं. So मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि attend the lecture, read. यहाँ पे रीडिंग का कुछ नहीं है. अटेंड द लेक्चर एंड देन स्टार्ट डायरेक्टली सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक. रीडिंग का कुछ है ही नहीं इसमें. Question bank from that Shweta's link that I have sent. Second, solve the questions from Institute book, which Pooja ma'am is going to help you out. Institute book, I never suggest anyone to look at the Institute book also, but for ethics, the story is different. Okay, so like I'll just show you some within chapter questions like this so that you get an idea. Sir, bol kya rahe? Exactly like this. Kamisha is advertises its past performance record by showing 10-year returns of composite blah 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 blah. ये वाला important example ये important है. मतलब in general ऐसे examples within chapter examples important है, which Pooja ma'am is gonna take during the lecture. So questions from Institute book, questions obviously premium question bank. These are the questions that you're gonna be practicing. And maybe Pooja ma'am might take across end of the chapter questions also, which are there at the end. I think she will take those questions also. Let me show you end of the chapter questions. The Shweta's को हम लोग मॉडल क्विज बोलते हैं ना, that is over here is called as end of chapter questions. These all examples are important. Professionalism, etc. Fraud वाला example, deceit, all these examples important. And apart from that, last में जो होता है यार, क्या कितना 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 दूर. So many examples only. Okay. This ones. Okay, so these problems. Okay, so this also will be important apart from the Institute book questions, Shweta's question bank, premium question bank, and end of chapter. So this is the practice required. अब few more clarifications about ethics. एक तो I just told you about the importance of the subject. Sorry, I just mentioned about the syllabus of the subject. He's gonna be having something called as 6 code, 7 standards and JIPs. कोई भी स्टैंडर्ड का नंबर याद नहीं रखना है. फॉर एग्जाम्पल 1A नॉलेज ऑफ लॉ है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो 1A नॉलेज ऑफ लॉ ऐसा लाता नहीं करते. यू शुड नो व्हाट इज नॉलेज ऑफ लॉ. 1A क्या है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट व्हाट इज देयर इन द नॉलेज ऑफ लॉ दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर इट. इसमें नोट्स ज्यादा काम में नहीं आएंगे, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस काम में आने वाला है. सो मोर द प्रैक्टिस यू डू राइट डाउन, यहाँ पे ऐसा ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करना था, दैट इज गोना हेल्प यू आउट मोर. Okay, importance from the exam point of view, 180 questions are going to be coming in the exam that you know it by now. Out of that, 27 questions are going to be from ethics. Okay, now there's some misconceptions, so I want to clarify it. कि some students को ऐसा लगता है कि ethics में पास होना is compulsory. Ethics पास हुआ तो ही मैं पास होता है, ऐसा कुछ. There is no passing in ethics or there is no passing in any subject. If you overall score that 125 approximately 125 out of 180 अगर आप स्कोर करते हो, तो irrespective of how much you score in ethics, even though you might score 0 in the ethics, worst case you still pass the exam. Then why ethics is that important? Because अगर मैं ये 125 क्रॉस करता हूं तो ethics का मैटर नहीं करता. तो ethics इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CFS ने क्लैरिफाई किया है ऑन देयर वेबसाइट दिस सब ethics adjustment for those students who are somewhere over here 123 या 122. इस रेंज में जो स्टूडेंट है जो मिनिमम पासिंग स्कोर के 2-3 मार्क्स आर लेसर देन द मिनिमम पासिंग स्कोर. For those kind of students, they are not going to fail you. They will still pass you if your score in the ethics is something around 20 plus out of 27. If you're scoring well in the ethics and unfortunately you are on the borderline, you will be given some grace marks and you will be given pass. ओके, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू बोला गया है कि इफ यू आर समवेयर अराउंड 126 127 आउट ऑफ 180, यू जस्ट पास. बट आपका इथिक्स का स्कोर 10 आउट ऑफ 27 है या उसके भी नीचे है, स्कोर मिजरेबली बैड इन इथिक्स, देन यू विल बी फेल्ड. सो एक नैरो बैंड रखा है. बट अगर मैं 127 को क्रॉस करता हूं तो मेरा इथिक्स का स्कोर डज नॉट मैटर.
122 के नीचे जा रहा हूं, मेरा ethics का score will not matter, I'll still fail. So if I'm on a borderline like this and I've scored really good marks in ethics, I will be passed. And similarly, if I'm on the borderline, but on the other side of border, but I've scored miserably bad in ethics, I will not be passed. That's the like importance of ethics for those guys who are going to be there on the board. I hope none of you are in those criteria. I hope all of you are in 130 plus criteria. But it's my responsibility to tell you, if you are on the borderline, the ethics score is going to come to him, like is going to matter a lot. She would take the sessions on a daily basis for around हाँ ये बता रहा था मैं थियरी आई मीन ये क्यों एक साथ नहीं ले रही है पूजा मैम लाइक क्लासरूम में आके क्यों नहीं ले रही है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस एंड इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अ डेली प्रैक्टिस सो दैट्स द रीजन शी इज टेकिंग लाइक एक एक स्टैंडर्ड लेगी वो शी विल पुट अ शेड्यूल ऑन द ग्रुप एक एक स्टैंडर्ड लेगी एंड then she will start a practice session on that. अब तक क्यों नहीं लिया उसने because she was busy with the February exam. Students rather than she did not get a time to do that. Some of you will, I think I saw Sanya. Sanya, are you there? Asking some question to her in the morning. So she was like solving the doubts for some of you. I think some of you might have attended her session in last like what June, July or something like that. Okay, so anything that you want to ask me, let me know. If you don't understand something, like you can ask a doubt or you can forward that out to me also. Anything that you want me to clarify. तुम लोग को इंश्योर बुक बाय नहीं करना है. You don't have to buy the insured book. You have to stick to the Shvedas only. नहीं होगा गौरव ethics offline नहीं हो सकता because ethics requires practice and it's requires like half an hour 45 minutes का session only. So for half an hour 45 मतलब मैं practice ले सकता हूँ in the class में अचानक से कर सकता हूँ और practice but पूरा ethics offline लेना does not make sense. So ethics is to be taught and learn online. Half an hour sessions mostly every day will help you out. In hours time will we complete it? Almost it will take around we're starting in what 11th February tomorrow. I think she's starting it, so she'll be able to finish it by first week of April, approximately. Yeah, Aditya, go on. Hello. Hello. Yeah, Aditya, go on. So I'm going to ask, sorry, I'm going to ask you what time will the lecture take place? I'll WhatsApp you. I'll send that details. Don't worry. ठीक है Because I'm, तो आस्क नहीं बाकी वो बाकी मैं बता दूंगा मतलब बाकी टाइम क्या है वो सब बता दूंगा बट अगर कुछ डाउट है एथिक्स के सिलेबस के बारे में एथिक्स के बारे में तुमने कुछ अफवाह सुनी है रूमर सुनी है गेट इट क्लैरिफाइड फ्रॉम मी आई जस्ट सर गिव वन एग्जांपल है कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज बट मुझे क्या लग रहा है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग सॉरी अथर्व या कोई समवन वाज आस्किंग सॉरी टू इंटरप्ट व्हाट आई वाज सेइंग इज मुझे क्या लग रहा था एथिक्स के बारे में कि जो लगता है ना करना है अंदर से वो नहीं करना इज एथिक्स. हाउ मेनी ऑफ यू विथ मी ऐसे लगा था तुम लोग को राइट ना सबको ऐसे लगा ना कि जो जो अंदर से करने का मन करता है ओके जो इनसाइडर ट्रेडिंग करने का मन करता है इनसाइडर ट्रेडिंग से वो नहीं करना इज एथिक्स राइट ये मुझे लगा था बट व्हेन आई स्टडीड एथिक्स इन 2009 आई रियलाइज इससे बहुत ज्यादा है जैसे मैंने बोला रिसर्च रिपोर्ट लिखना नॉट अलाउड यूजिंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाके बोलो प्लीज आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास आ इट्स लाइक दिस कॉलेज में ना मेरा कल एग्जाम है एंड मुझे आज पेपर मिल गया है तो मैं क्या करूंगा वो पेपर देखूंगा नहीं इनसाइडर ट्रेडिंग करूंगा नहीं ओके सेकंड वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा नहीं क्योंकि सबको मिल जाएगा सब लोग वो कॉपी करना चालू करेंगे और तीसरा लुक एट द लेवल ऑफ एथिक्स मैं टीचर को फोन लगाऊंगा सर टीचर पेपर चेंज करो क्योंकि पेपर लीक हो गया दिस इज ये लेवल का थॉट तो सोचा नहीं था मैंने इतना थॉट था कि रेड सिग्नल है तो क्रॉस करना इज अनइथिकल ओके दैट इज व्हाट लाइक था बट इससे मच मोर डीपर है सो फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 पास हो गया ओके जस्ट टू गेट एन आइडिया आई पास लेवल 1 am I a level 2 candidate what do you think unmute anyone and tell me I pass level 1 No, लेवल 1 तो पास हो गया but you have not registered for the level 2 exam. स्मार्ट है तुम तो गुड तुमने पैसा नहीं भरा लेवल 2 का एग्जाम का तो तुम कैंडिडेट कहां से हुए सेकंड सीएफए कोर्स इज यूजलेस कोर्स ये स्टेटमेंट मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूं वायलेशन है और नॉट वायलेशन CFA course is a useless course. Violation or not a violation? So no violation. No violation? So because it depends on people to people का thinking. Good. गौरव को अभी स्मार्ट हो गया गौरव. Good. Second, ethics section
had no question. Sorry, okay, ethics nahi. Equity questions had no question on CAPM concept. Ethics question Violation. in the exam, equity section had no questions on CAPM. Violation or not a violation? Violation. तुम इतना स्मार्ट हो, तीनों के आंसर्स आ गया, गुड. एग्जाम में जो चीज पूछती है यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज दैट, एंड एग्जाम में जो चीज नहीं पूछी है वो उसके बारे में भी नहीं बता सकते. So these are the minute things that you will be like getting master. तुम लोग वैसे मास्टर हो चुके हैं ऐसे लग रहा है. You will get to know about it more when Pooja ma'am will be taking those questions from you guys. So she will send the schedule, and I guess you guys are going to have fun with ethics. मतलब अच्छा subject है. I would have loved to take it, frankly. I would have loved to take it, but you would find that she would be doing a better job than me. You tell me later on, by the way. Okay, and by the way, on a serious note, if you don't understand something, you let me know. Okay, and you tell Pooja ma'am also about it. Okay, anything? कुछ पूछना है? I listen from level 1 pass that for ethics they prefer institute. मैं वही बोला, institute book करना ही है. प्रिंस मैं बोला institute book करना है, but institute book का लाइन नहीं पढ़ना है. institute book के ये जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है institute book का, पागल हो जाओगे ये लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो. institute book के ये जो बीच बीच में जो मैंने बोला ना एग्जाम्पल दिख रहे थे ना, ये वो एग्जाम्पल्स पढ़ने थे. कहाँ गए वो? Like this, how to use your CFA designation. एक ही एग्जाम है. Advertisement states that all the firm's principal and CFA charters are passed the 3 exams in their first attempt. The advertisement prominently links this fact that the funds have achieved superior performance. Just look at this statement. Okay, just copy this statement. You think and you tell me, what do you think? It's a violation or not a violation? Everyone think about it. I'll just copy this example. Okay, everyone see this? And tell me in the chat section, is it a violation or not a violation? ओके रियान, क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा वायलेशन है ये? गुड रियान, गुड. तुम लोग तो अभी से आ रहा है. गुड अथर्व. The point over here is that stating that all are CFA charter holders, all have passed the 3 exams on their first attempt, it's fine because it's a fact. But उससे तुम क्या कर रहे हो? उससे तुम बता रहे हो कि because of that the company has achieved superior performance. तुम facts को claim कर सकते हो कि you are a brilliant student, but you can't say कि because you have passed CFA you are generating a very good performance. परफॉर्मेंस को सीएफए के डेजिग्नेशन के साथ लिंक करना इज नॉट अलाउड. सो दैट इज व्हाट मोर यू आर गोना बी लर्निंग इन दिस. ठीक है, चलेगा. सो आई थिंक क्लियर है. तो आई मीन कल से शी विल बी सेंडिंग द शेड्यूल एंड यू विल बी सीइंग हर मे बी इन द इवनिंग एंड यू विल बी सीइंग मी इन द आफ्टरनून फॉर द प्रैक्टिस सेशंस. ठीक है, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय.